Great morning, student. Hope so you are fit and fine at your home. Today we are going to discuss our chapter number 3, working with table. So today we are going to discuss working with table. In this chapter we are going to discuss about the table. Word 2016 offers flexible feature of presenting information in a tabular form. A table consists of a number of columns and rows. You can see there are the number of row and columns in your screen. It is very useful in organizing and representing the text information and number. Now we are creating a table. So how to create a table we are going to discuss. A table is an organized arrangement of the text in the form of row or column. Okay, you can see on your screen. Creating a table. A table is an organized arrangement of the text in the form of row or column. The intersection of the column and a row is called cell. A word provides a variety of ways to create a table. To insert a new table, place the cursor where you want the table insert. Using a table grid, first method is using a table grid. Firstly, click on the table button on the insert tab. In the table group, that table group option will be appear. This will be open the drop down menu that contain a grid. So firstly, drag the mouse pointer over the grid to select the number of rows and column you want to in table. मीन्स कि जितने भी आपको रो और कॉलम चाहिए आप उतना ही ड्रैग कर लें उसको. द टेबल विल बी इंसर्टेड ऑन योर वर्किंग एरिया. आपके जो वाइट एरिया होता है उसको हम वर्किंग एरिया बोलते हैं ना, तो उसमें आपकी टेबल इंसर्ट हो जाएगी. फिर है यूजिंग इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स. मीन्स डायलॉग बॉक्स से आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं. नेविगेट टू इंसर्ट टैब. अगेन हमें इंसर्ट टैब पे जाना है एंड देन क्लिक द टेबल बटन. नाउ देर इज ऑप्शन इंसर्ट टेबल. आफ्टर द ग्रिड देर इज ऑप्शन इंसर्ट टेबल. द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर. जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर. स्पेसिफाई द कॉलम एंड रो एंड द क्लिक ओके. मीन्स वहाँ पे आपने जितने भी कॉलम चाहिए जितनी भी रो चाहिए आप वहाँ पे फिल कर दोगे और आपकी रो विल बी इंसर्टेड. नाउ व्हेन यू इंसर्ट अ टेबल यू विल गेट द डिजाइन एंड लेआउट टैब on the ribbon under the table tool. So let's know more. Means we know more than about the table. We can also insert a table by clicking on the insert tab and then selecting table button, draw table option. थर्ड मेथड है ये हमारा. ड्रा टेबल मेथड भी कर सकते हैं. पेंसिल, draw the pencil on the working area. Draw row and column using the dragging method. देखो पेंसिल से कैसे क्रिएट हो रही है ना आपकी रो और कॉलम. यू सी इन दिस पिक्चर. जैसे जैसे आप अपनी हैंड्स की मूवमेंट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी टेबल ड्रा हो जाएगी. ओके, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं. नाउ द फैक्ट, you can insert a pre-designed tables using insert table, quick table and click on desired template. मीन्स वही insert table से quick table भी हम ले सकते हैं. There are the many option available on your Microsoft 2016. Next is entering data.
Entering data in a table means how can we enter data in a table? Place the insertion point in the table cell where you want to type data. Firstly अपने कर्सर को वहाँ पे प्लेस करना है. To move the next adjoining cell, either press the table tab key or the right arrow key. Okay. To move the previous cell, either press the shift plus tab key or the left arrow key. Enter the data as given in the table. The up and down arrow key will be shift the cursor to the cell above the below the current cell. To select action and do click this. So first is a cell, triple click in the cell, so whole cell will be selected. A row, move the mouse to the left of the row margin, then click on the left mouse button. A column, place the mouse pointer over the top of the column, click the left mouse button. Now your column will be selected. The entire table, double click on the table move handle. There is a 4 arrow, the whole table will be selected. Okay, are you understand this thing? How can we select column, row and table? You can also select the different part of our table using the select button in the table tool on the layout tab. Quick view of this topic. Now to select an entire table means आप पूरी टेबल एक ही साथ करना चाहते हो तो click anywhere inside the table and press Alt 5 key of the numeric keypad with the numeric num log.